in terms of the structured way forward, I'll start from the society. One is, of course, insisting on greater Hindu consciousness within the families is one. But two, somehow I'm desperate to stop exodus of Hindus from our country. I'm desperate to stop it for two reasons. I'll give you an example. So there's a very upmarket locality in Chennai called Mylapore. Okay, it's almost the equivalent of, let's say, Vasant Vihar or Jorbagh in Delhi. It's full of elderly couples in their 60s and 70s. The children are in United States. So the children take comfort from the fact that we are sending money. My parents are living a good lifestyle. So parents after 65 start needing house helps. So these guys across the board started engaging house helps. उसमें से एक family में एक driver जो है, he's been with the family for close to 25 years. उस driver के बच्चे को इस couple ने पढ़ाया. एक दिन ये couple इस ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहे थे, उसका बेटा भी उस गाड़ी में था. इनके मुंह से कहीं 3 करोड़ का ये शब्द निकल गया. बच्चे को ये लगा कि इनके घर में 3 करोड़ पैसा है. प्लीज गूगल एंड सी. द बॉय सेंड्स हिज पेरेंट्स अवे and bludgeoned the couple to death. A family that has been cultivated by this couple ultimately proved to be untrustworthy. अब इसके बाद बच्चों का रिएक्शन क्या था? अब वो तो अमेरिका छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे. So in that locality, everybody has decided हम माता पिता को यूएस लेके जाएंगे. अब वहां से घर किसके हाथ में जाएगा? तो घर ये बेचने के लिए तैयार हो गए. एंड साउथ में अब ये ट्रेंड हो रहा है दैट गल्फ के मनी के वजह से people are pooling in resources to throw money at whatever price that is asked, ताकि रियल एस्टेट इनके हाथ में आ जाए. जब आप विकेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खरीदने वाला ऑलरेडी है वहां पे और वो अपने लिए नहीं खरीद रहा है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए खरीद रहा है. सो द स्ट्रैटेजी विल बी दे विल कम. आपके रहने के तौर तरीके और उनके तरीके अलग हैं और आप में गट्स नहीं है उनको रोकने के लिए, तो पहले इस जगह से एक फैमिली जाएगी, फिर दूसरी फैमिली जाएगी. ऐसे ही होगा. So in places like Jayanagar in Bangalore, in places like Mylapore in Chennai, in all these places, whoever I can reach out to, I'm telling them, don't be such myopic idiots. Find a way to retain your presence here. This is the primary call right now. वरना आप किसके लिए लड़ रहे हैं? सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं. तो what is the point? It's not as if they're being kicked out. They're going on their own. This is not what we are fighting for at the end of the day. So in South, fortunately, because there are still some temples left, मंदिर के बाहर सबसे पहला जो सर्कल होता है वो ब्राह्मणों का सर्कल होता है, क्योंकि वहां पे पंडित रहते हैं. इट इज कॉल्ड अग्रहारम. अग्रहारम. Haram is the garland around the temple. Agra is first. Most of the Agraharams in Tamil Nadu are now Muslim dominated. In places of Sanskrit learning such as Kumbakonam, Tanjavur, Madurai, all these places, these are places where barely 70 years ago there used to be equivalents of southern Kashi. Gone. अब सुनने में आ रहा है कि हरिद्वार में भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है, उत्तराखंड में सिचुएशन कुछ अलग नहीं है. राइट? फर्स्ट थिंग, स्टे योर ग्राउंड, डोंट लीव. सेकंड, जो है उनको बचाने के लिए आपको कम्युनिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ेगी. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सम एसोटेरिक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस. स्ट्रीट इज वेयर द बैटल इज बीइंग फॉट राइट नाउ. सो फोकस ऑन दैट, व्हिच मींस क्षात्र की जरूरत है. आप वेदांत पढ़ाइए जाइए, देन यू कीप टीचिंग उपनिषद, कीप डूइंग ऑल ऑफ दैट. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. But if it is not going to create Purushatva in you, what is the point? What is the point? All the other Varnas can live peacefully only when there is a Kshatriya with a sword in his hand. That is why Kshatra Dharma is actually the supreme Dharma. So that is one. Two, I don't think all legislations which are meant to protect women are necessarily anti-men. Okay? But gradually उनके abuse का जो scope है, वो judiciary को भी समझ में आ रहा है. जैसे 498 का जितना abuse होता है, वो समझ में आ रहे हो. So there is a move towards gender neutrality to say that rights must be equally be available to men. But you see, there is only one point to which I will hold the law and the system responsible for emasculating you. Beyond that, it's not as if you are doing anything to retain your masculinity. The test of masculinity is not just to produce children. I'm sorry to say this. The test of masculinity is also whether you can stand up to protect them when the situation calls for it, and whether you can protect your community. The third book of my series, the third book will focus on the motivation and the triggers behind the Sangathan movement. Because what we need at this point is Sangathan 2.0. And isko samajhna bahut hi zaruri hai. We need, so it's not as if any of our problems are new. Nothing is new, by the way. The only thing that is new is that jitna हिंदुत्व 1920 में था, उतना 2023 में नहीं है. That is the only difference.
Problems remain the same. Your ability to understand them and your ability to deal with them has gone from bad se battar. That's it. Otherwise, 47 wouldn't have happened, right? So I'm hoping to draw some lessons from history because I don't have any training in humanities on my own. I'm not trained in abstract thinking beyond a point. So whatever it is that I have to do, I'm looking for inspiration from history to teach me a few lessons, which I can at least pack it and say, here are your solutions to your problems. Or at least, वहां पे आपको ये करना चाहिए था, आपने नहीं किया, at least अब तो करो. Unfortunately, on that front, I still don't have answers. I hope to have answers by the time I launch the next book, this third book the next year. Then I'll be in a much better position to answer some of these questions because it deals with 1925 to 1946. Dravidianism, the birth of Khalistani movement is not 1980. It is after the separate electorates of 1909. Because once the Muslims started asking for separate votes and separate electorates, the Britishers started telling these people, आप हिंदू धर्म से अलग हैं, आपका अपना एक धर्म है, and you start asking for electorates. वहां से इन्होंने अपनी हिस्ट्री को भी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना शुरू किया. विजुअल रिप्रेजेंटेशन से लेके सब कुछ चेंज होना शुरू किया ओनली आफ्टर द लेट्स से अर्ली 1900s. सो दैट मूवमेंट स्टार्ट्स. कम्युनिस्ट मूवमेंट, आरएसएस इन 1925, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न वाज सेट अप इन मार्च 1990. ये सारा उसी दौर से शुरू होता है. 46 तक पाकिस्तान बनना शुरू हो जाता है बिकॉज इट इज बिकम अ रियलिटी. तो 25 से लेके 46 तक क्या हुआ, खिलाफत के बाद से लेके डायरेक्ट एक्शन डे तक 16 अगस्त 1946 तक क्या हुआ, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड. जितने भी मिस्टेक्स तब हमने किए थे, मेरे हिसाब से हम उन मिस्टेक्स को दोहरा रहे हैं अंडर अ हिंदू गवर्नमेंट. थैंक यू.